Suppose citizen chart is important because if you want to increase accountability, citizen chart is important. If you want citizen-centric governance or quality of service delivery, citizen chart is the center thing, important for JS paper 4 and 2. So what is citizen charter? So citizen charter is written voluntary declaration. So it's WVD, written voluntary declaration. So it is by service provider. So it is a written voluntary declaration by service provider. So VWD, written voluntary declaration by service provider, that outlines the commitment of organization, that outlines the commitment of organization, that outlines the CEO, commitment of organization towards standard quality, that outlines the commitment of an organization towards standard quality and time frame of service delivery, standard quality and time frame of service delivery. So what is citizen charter? It is the written voluntary declaration by service provider that outlines the commitment of the organization, towards the standards of quality and the time frame of service delivery mechanism. So the citizen charter, so what does it do? It provides what kind of services are provided. For example, बर्थ सर्टिफिकेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए. एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, पर्सन रिस्पॉन्सिबल, उसका नाम होगा, उसका नंबर होगा. देन टाइम फ्रेम कितने दिन में पढ़ाएंगे, सपोज 10 डेज में पढ़ाएंगे. स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, ठीक है. एंड देन व्हाट विल द ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सारे होते हैं सिटीजन चार्टर में. सो देयर द वन ऑफ द रीजन फॉर द डिसएम्पावरिंग द पीपल इज द lack of, it is the information asymmetry. There is a lack of information towards the common public. So at least through the help of the citizen charter, we are trying to reduce the information asymmetry and empowering the citizen. तो आइडियल सिटीजन चार्टर में क्या होना चाहिए? विजन एंड मिशन स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विजन एंड मिशन स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इन्फॉर्मेशन about the nature and quality of service, time frame of delivery, expectation of the organization. So expectation of organization from client, so expectation of organization from client. So expectation of the organization क्या expect करता है client से, expectation of organization from client. तो एक तो vision and mission statement of the organization, then information about the nature and quality of service. तो ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, तो वो लिखा होगा विजन. फिर इन्फॉर्मेशन अबाउट नेचर, कैसा नेचर एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में लिखा. फिर टाइम फ्रेम, कितने टाइम में प्रोवाइड करें, टाइम फ्रेम और डिलीवरी. फिर एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम क्लाइंट, तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट से क्या एक्सपेक्ट करता है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम क्लाइंट. सो प्रिंसिपल ऑफ सिटीजन चार्टर, कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं सिटीजन चार्ट का, ये ऐसे याद रखते हैं. क्यू चूती है, वाट लगाई एसपी से, क्यूसी वॉट एसपी, तो क्यू से क्वालिटी, सी से हो गया हमारा चॉइस, देन वी से वैल्यू, ए से हमारी अकाउंटेबिलिटी, सी से ट्रांसपेरेंसी, एस से स्टैंडर्ड्स एंड पी से हमारी पार्टिसिपेटिव. तो क्वालिटी, तो इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. एंड सी से चॉइस, सो चॉइस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द यूजर वेर एवर पॉसिबल. देन वैल्यू फॉर द टैक्सपेयर्स मनी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, transparency of the rules, procedure and schemes, transparency of RPS, rules, procedure and scheme. And SP means standards. So certify what to expect within time frame, and P is a participative. So you consult with the government and through grievance redressal mechanism, take feedback and evolve, and improve. So this citizen charters lead to citizen centric administration and good governance. तो डायग्राम बना सकते हैं. सिटीजन चार्टर लीड्स टू ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, लीड टू गुड गवर्नेंस एंड ऑल्सो लीड टू क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी. द इंपॉर्टेंट सिटीजन चार्टर थे इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ensure the citizen centric administration and improve transparency and increase efficiency, and allow the grievance redressal mechanism. It provides for the grievance redressal mechanism and ensure the quality of service delivery and grievance redressal. So better service delivery and grievance redressal. So ensure grassroots level of democracy, include the grassroots level of democracy, better service quality and grievance redressal. So lack of public awareness, lack of public appreciation, and there is a lack of trust among people, and there is a no legal backup. So no legal backup for the सर्विस. सो इसे टूथलेस टूल, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, इसके दांत नहीं है. सो यहाँ पे मुंह है लेकिन दांत नहीं है, तो इट इज़ अ टूथलेस टूल फॉर सिटीजन. इट्स अ टूथलेस टूल, देयरफॉर देयर इज नो लीगल बैकअप. सो दिस it is a toothless tool. And most of the time it's just copied from other organization, and it's poorly designed and use complex language content. तो इंग्लिश में लिखा हुआ है,
ठीक है, पुअरली डिज़ाइन है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड। यूनिलेटरल ड्राफ्टिंग, तो ड्राफ्टिंग होनी चाहिए विद द पब्लिक पीपल, so without public participation there is a unilateral drafting. So while drafting, consultation with the public is very minimal या absent, so there is a unilateral drafting. So there is a lack of infrastructure, we need human resource, we need proper infrastructure for the public service delivery, and insensitiveness of the staff, and there is a lack of monitoring, and there is a hierarchy gap between officer and operating staff, and there is a rarely updated, so they are not updated, ऐसे कब का बनाए, they are rarely updated, and there is a tendency to have uniform citizen charter for all office, they just copy and paste होता है. So when suppose a citizen charter made by the head of the department, so it is implemented across vertical, horizontal, or vertical everywhere. Same citizen charter is implemented without any modification. Every department different set of function and services. Ignoring that, it is implemented horizontally, vertically in all the departments. So there should be uniqueness of citizen charter related to particular organization. And there is a behavioral and bureaucratic attitudinal problem with respect to implementation of citizen charter. So say second ARC की recommendation क्या है कि internal restructuring होनी चाहिए. Should precede the citizen charter formation. पहले internal restructuring करो, फिर citizen charter बना. तो internal restructuring should precede citizen charter formation. So internal restructuring should precede citizen charter. And complete analysis होनी चाहिए, existing system की. And it should not one size fit all. So one size not fit all approach. ठीक है, तो जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं एंड रिसोर्सेज हैं, द गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट नीड टू बी इम्प्लीमेंट वेरी सिग्निफिकेंट. सो देयर शुड बी वन साइज नॉट फिट ऑल अप्रोच. तो सिटीजन चार्टर शुड बी specific to a particular organization and should be framed after consultation with the people. So involving citizen while formulating citizen charter and also increasing awareness about the importance of the citizen charter. So we should not only provide service but also look for the grievance redressal mechanism and take the feedback, and we should improve and evolve. To taking feedback, we must improve and evolve. And there should be periodic evaluation of citizen charter. Periodic evaluation. We should set the standard and follow the best practices, universal best practices, and try to reach to the universal best practices. We should ensure that officers are held accountable for the result. There should be sensitization of officer, and there is regular skill upgradation. Regular skill upgradation, sensitization, regular skill upgradation of the officer. And we should improve citizen and civil society in the preparation of citizen charter, and should involve civil society in the dissemination of information about the citizen charter. About increasing awareness, we can involve the citizen, that is civil society. So we need Sevattam model, that is integrated approach. Integrated approach, that is citizen charter, public service delivery, and public grievance redressal, and service delivery capacity. That is quality of service delivery. Sevattam model में integrated approach होती है, जहाँ पे होता है Sevattam model में यहाँ पे होता है citizen charter, public grievance redressal, and quality service delivery. So citizen charter lead to citizen empowerment, and public grievance redressal lead to redressal of grievances, redressal satisfaction, and quality service delivery lead to capacity enhancement, and that lead to the quality of service delivery, and it is known as Sevattam model. So Sevattam model have three things: citizen charter, that is grievance redressal mechanism, and capacity building of organization. तो citizen charter का डायग्राम बना सकते हैं. citizen charter, तो यहाँ पे awareness about services, awareness बढ़ानी about service, set standards, citizen empowerment, awareness about service, set standards, citizen empowerment, awareness about services, set standards, citizen empowerment, lead to transparency, accountability, lead to good governance. So awareness about citizen, set standard, and citizen empowerment, transparency, accountability, lead to good governance. So citizen charter, awareness about services, set standards, lead to citizen empowerment, lead to transparency plus accountability, lead to good governance. So ultimate aim of any organization is the satisfaction of the customer, the satisfaction of the
कस्टमर। सो यहाँ पे कोड सिटीजन चार्टर पर लिख सकते हैं गांधी जी की, दैट कस्टमर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर। तो क्या है, कस्टमर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर ऑफ आवर प्रेमाइस। किसका, प्रेमाइस है सपोज ये, तो कस्टमर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर ऑफ आवर प्रेमाइस, ये प्रेमाइस है। तो गांधी जी ने क्या बोला है, कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर ऑफ आवर प्रेमाइस, ही इज डिपेंडेंट ऑन अस। ये किस पे डिपेंडेंट है, प्रेमाइस पे, ही इज डिपेंडेंट ऑन अस एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन, और प्रेमाइस भी इस पे डिपेंडेंट है, यही तो पैसा देगा। तो ही इज डिपेंडेंट ऑन अस एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम, ही इज नॉट एन इंटरप्शन। ऐसा नहीं कि इसके आने से क्या होना, इंटरप्शन होगा। ही इज नॉट इंटरप्शन इन वर्क, ही इज द पर्पज ऑफ इट, ही इज पर्पज, ही इज नॉट इंटरप्शन इन द वर्क, ही इज अ पर्पज ऑफ इट। सो अकाउंटेबिलिटी में इसको लिखते हैं, सिटीजन चार्टर लिखते हैं, व्हाट एम अकाउंटेबिलिटी विद द सिटीजन, विद द ऑर्गेनाइजेशन इज अकाउंटेबल टू द पीपल for the standards of service delivery. For public services delivery, for example, providing service at the doorstep of the people. For example, initiative of Delhi government. For example, in Delhi there is a doorstep delivery of the public services. It's a landmark measure. So that can be implemented in other states as well. Doorstep delivery of the public services. This is a step to call 1076. An officer will comes home and gets the work done.